Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear student. Inshallah today we'll talk about the second topic of this chapter. And a couple of days we have talked about the introductory topic of this chapter, which is electrostatic, and I have explained all the term and related topic related with the introductory topic electrostatic and their practical examples. And I have also assigned some assignment to you pupils to do in your home. About the electrostatic, we have talked about the charges, the type of electrostatic, which is electrodynamic and electrostatic, and other was related topic that how many type of charges there are, two type, positive and negative, how they will do. Positive is attract each other, and negative positive repel each other. The same case with the negative is also repel each other, but dissimilar charges, unlike charges mean positive and negative, they must attract each other, and they are producing some sort of neutral point here. And by rubbing, by heating, you will see that there is the transferring of charges, especially electron. I have mentioned in my first topic lecture that positive charge will never be transferred from one body to another body, only the electron will move from one body to another body. In the same case is here. Today inshallah we are discussing very important topic, that is Coulomb's law. What is Coulomb's law? Before to start the Coulomb's law, I have a little bit to say about the name is of this Coulomb is Charles Coulombs. He was a French scientist in 1874 AD, I think. He is performing the many experiment. By through experiment he want to verify, justify, want to find out the basic relation between the two charges, positive and negative, and positive and negative. He measured force between the two electric charges. These electric charge may be positive and maybe negative and positive as well. As through observation, he by the experiment performances उन्होंने ये जाना, बल्कि उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि बेसिकली जो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस होते हैं, स्पेशली अकॉर्डिंग टू दिस Coulomb definition, the magnitude of the electrostatic forces between the charges is directly proportional to the product and inversely proportional to the square of the distance between them. Let me to explain furthermore this definition. This is the force, and which is known as the mutual forces between the two charges Q1 Q2, which has to be placed in the front of one another. Sometimes you can use the point charge, but I didn't mention the point charge here. I just mentioned the two charges. You can use it point charge as well as without using the word point with the charges. Okay? So this is Q1 Q2. It means that the force of these between these two mutual charges is directly proportional to their product. How it is like that? Let's say when you are putting the two charges, positive and negative, you will see that the positive will exert some force on the negative charge, and the negative force will exert some force on the positive charge. We see that the forces is equal in magnitude from both the sides, mean the force which has been exerted by Q on Q1 mean from positive toward the negative, and the same amount of force should be exerted from Q2 from negative side, mean from Q2 to Q1, but their direction is opposite, because one is directed toward this point and another is directed toward this point. So that's why we can say that these forces are directly related to one another. The second point in the definition is that is in basically आपके पास क्या है? This is inversely proportional to the square of the distance between them. Means that very simple. Let's say this is the R. This is separation between the two charges. If these two charges are going to be separated from one another, very simple. Let's say I will use a very interesting example to you people. We say that the pressure decreases when anything is moving against the force of gravity, mean in the upward direction. So why it is like that? Because of that reason, how much you are close to the center of gravity, that much force is being exerted more on you as well as in the particle and the air which is surrounded by you, the layer of the
एयर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितना आप ऊपर चलते जाएंगे द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज गोइंग टू बी डिक्रीज रिड्यूस एंड द पॉइंट विल कम विच इज नोन एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल where the force of gravity is totally vanished. So I'm not going toward the vanished point, that absolute point. I will just give the related example with this one कि जितना आप ऊपर चलते जाएंगे तो R की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी, और जितनी R की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी आप देखेंगे कि उसके साथ साथ उस पर जो फोर्स लग रहा है बेसिकली वो डिक्रीज़ हो रहा है। किसकी फोर्स लग रहा है, क्योंकि हम दो चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो दो चार्जेस के बारे में जब हम उसको रखते हैं तो उस पर जो एक दूसरे पर जो ये एग्जर्ट करते हैं फोर्स, वो फोर्स जो है बेसिकली क्या हो जाते हैं, वो रिड्यूस हो जाता है। उस रिड्यूस होने की वजह यह है कि डिस्टेंस इंक्रीज। इसकी मिसाल आप वो भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ टू मैग्नेट इन द मेटल्स। सो क्या होता है व्हेन यू आर गोइंग टूवर्ड द मटेरियल which has been attracted by the magnet, so what will happen, you will see that the maximum force exerted on the object on the material the metal by the magnet. But if you increase the distance between these two bodies तो क्या होगा, उस पर जो फोर्स लगेगा वो डिक्रीज होता जाएगा। तो इस वजह इससे ये स्क्वायर का मतलब है, दिस इज मैथमेटिकल टर्म स्क्वायर। जितना आप चलते जाएंगे तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इंक्रीज हो। मैं इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता जाऊँगा इंशाल्लाह कि हम चार्जेस को किस तरह रखेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो मैंने यहाँ पर चार्जेस की सिमिलर चार्जेस की या जिस तरह हमने मैंने लिखा है कि एफ इज़ बेसिकली इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। इसमें जब आप इक्वेशन को देख लें तो यहाँ पर एक के टर्म यूज़ हुआ है जिसको हम डिपेंड करता है कूलम कांस्टेंट कहते हैं उसको बेसिकली, जो कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करता है, और सिस्टम ऑफ यूनिट वेयर F1 एंड F2 मतलब ये F1 R1 क्यों आर मेजर जहाँ पर हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन नेचर ऑफ मीडियम पर इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम आपके पास है। फॉर एग्जांपल आप कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से स्पेस में आपके पास वैक्यूम में आप यूज़ कर रहे हैं, एयर में आप यूज़ कर रहे हैं, या कोई और डिंस मीडियम आप यूज़ करेंगे। और जितना आप एयर मतलब मीडियम को चेंज करते जाओगे इन द सेम केसेस आपके पास जो वैल्यू ऑफ के जो है वो आपके पास क्या होता जाएगा, वो भी आपके पास चेंज होता जाएगा साथ साथ में। मतलब ये हुआ आसान लफ्ज़ों में ये होगा कि वैल्यू ऑफ के जो है वो डिपेंडेंट है ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है आपके पास वो है के इज इक्वल टू 1/4πε0 के बराबर है। अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है ε0, जिसको हम लेते हैं बेसिकली, इस टर्म को हम कहते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस या फॉर फ्री स्पेस की हम बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है बेसिकली, जहाँ पर भी ये यूज़ होता है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोडायनेमिक की बात हो रही है, ठीक है। इसके साथ एक और टर्म यूज़ होता है लेकिन उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा, म्यूनार, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड से हम उसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसकी वैल्यू बेसिकली हमारे पास है। अगर आप नेक्स्ट यहाँ पर देख लें, ठीक है, तो आपको मतलब ये अगर आप उसको यहाँ पर नज़र यहाँ पर कर ले तो ये अगर आप देखेंगे इसकी वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, के की वैल्यू जो कि बराबर है 9×10⁹ के बराबर न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर के बराबर है। बेसिकली म्यू0 जो है ε0 जो है ये फ्री स्पेस की बात हो रही है। मतलब फ्री स्पेस का मतलब ये इफ देयर इज नथिंग इज एग्जिस्टेड बिटवीन द टू चार्जेस। लेट्स से आपके पास दो चार्जेस आपने रखे हुए, उसके दरमियान कुछ भी नहीं है, ना कोई एयर पार्टिकल है ना कोई मटेरियल है। मटेरियल आपके पास एंड कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है, सेमी कंडक्टर भी हो सकता है, आपके पास कोई मौजूद नहीं है, सिंपल स्पेस वैक्यूम आपके पास है, तो दैट एप्सिलॉन विल बी यूज्ड फॉर इट, ठीक है। लेट्स से हाउ टू फाइंड द वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ, बिकॉज हमें पता है कि ये म्यूचुअल फोर्स जो है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी? वेरी सिंपल, बिकॉज ऑफ दैट रीजन दैट द फोर्स इज exerted by 1 on 2 and the same force is exerted on 1 by 2, so both having a specific direction to one another. F1 is directed toward the F2 and F2 is directed toward the F1, so that's why it is a vectorial form. We can write it here. You can see F12 means force on Q2 by Q1 and the same is here. But one thing is very important to be noted, that I have written F1 2 and F2 1 something like that in this equation, and I have put it R cap. मैंने यहाँ पर R cap की वैल्यू यहाँ पर पुट करी। ये R cap बेसिकली डिनोट करते हैं किस चीज़ को? यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर, बिकॉज इसका मतलब ये है कि कूलम लॉ जो है इट इज़ वेक्टर्स, फॉर्म ऑफ की वेक्टर्स है आपके पास।
तो आपके यूनिट वेक्टर है आपके पास। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि एक के बराबर है। एक के बराबर का मतलब ही नहीं कि अगर आपके पास एक ही डायरेक्शन में सपोज करें फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में लगे तो दिस इज यूनिट वेक्टर, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो दिस इज यूनिट वेक्टर। इसको बेसिकली यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो इस वजह से अगर हम इसको भी देख ले तो कूलम फोर्स में भी जो फोर्सेस दो चार्जेस की तरफ से एक दूसरे पर लग रहा है विद सेम मैग्नीट्यूड, वो भी आपके पास एक यूनिट वेक्टर है आपके पास, ठीक है। इस वजह से आई मस्ट टू पुट इट अ केप ऑन द R12 and basically that is equal to 1 and so in the one direction, so that's why it should be 1, ठीक है। and so again we have let's say if you are taking the material medium, अगर मटीरियल मीडियम को ले लेते हैं, सपोज करें